So hello students, this is lecture 1 of standard costing and variance analysis. Okay, so this topic again is both in your cost accounting group 1 as well as CMA FM. Okay, so in CMA FM, you have got standard costing in detail, but the initial part is the same for both. So in your cost accounting, you only have material and labor variances. In CMA FM, you've got variances other than that as well. Okay, so what we are going to do is, again, for the common part, we'll just have lectures for both. And once we finish with material and labor variances, the cost accounting part will be over. Okay, your techniques of costing part will be over. And then I'll take separate classes for CMAFM to finish the chapter based on what is there in their course. Okay, so this will be the plan. And ठीक है, तो ये है हमारा, हम चालू कर रहे हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड वेरिएंस एनालिसिस। इसमें ये कॉस्ट अकाउंटिंग में भी है आपके ग्रुप 1 का, और ग्रुप 2 के सीएमएफएम में भी है। ठीक है, बस फर्क ये है कि कॉस्ट अकाउंटिंग जो ग्रुप 1 में है वहां सिर्फ आपके लेबर वेरिएंसेस तक है, और ग्रुप 2 में उससे आगे भी है। यानी ये हम बोल सकते हैं कि लेबर वेरिएंसेस तक के दोनों सेम है। ओके, इसलिए टिल दैट पॉइंट हम दोनों को साथ में लेके चल रहे हैं। ओके, this is our lecture 1. So सबसे पहले हम लोग we will see what is standard costing. Okay, and why is it required. Okay, so just assume there is a factory. Okay, there is a factory of Mr. A. Okay, now here in that factory you have, say, raw material of 1 lakh. Okay, he has to purchase raw material of 1 lakh in a period. Okay, so again, like we are doing standard costing and variance analysis. Okay, we are doing standard costing and variance analysis. This particular lecture is applicable both to group 2 and group 1. Okay, this is our first lecture. We have just started. Okay, so I was just taking an imaginary example to explain what standard costing is. Okay, now this is your raw material. This is the factory of Mr. A. Okay, he needs these things. He needs raw material of 1 lakh. Okay, and his labor rates, let us say, for 1 day, daily rates are rupees 500 per day. Okay, and let us say his machine efficiency means his machine is producing, okay, let's say 800 units. Okay, using this raw material, it is producing 800 units. That is its efficiency. Okay, basically. So, and in his market, current selling price of 1 unit, एक unit का selling price is say 5,000 per unit. ठीक है, his 1 unit selling price is 5,000 per unit, and now for certain selling and all, he has to pay some brokerage. ठीक है, so he has to pay 20,000. So these are certain details about his factory currently. Okay, now he is earning, let us say, is getting a net loss, okay, of everything. Once he sells everything and all that, he has a net loss of, let us say, 2 lakhs. Okay, so now what he has done is, Mr. A has called an expert in standards. He asked him, he has requested him, come and see my factory and see what is the problem, where is the inefficiency that I am getting net loss here. Okay, so this person came
and he has visited all these areas. Okay, so he found out, his finding is that raw material purchase, okay, is little costly. It should be within the 60,000 level. The purchase itself is a bit costlier. Okay, and the machine make is such that it is not producing राइट अमाउंट ऑफ यूनिट्स. ठीक है, तो वो पहला ये जो इसने क्या किया, इनको जो है नेट लॉस आ गया 2 लाख का. ठीक है, अब ये अपने फैक्ट्री का के बारे में ओपिनियन ले रहे हैं एक एक्सपर्ट से. ठीक है, तो एक्सपर्ट को बोल रहे हैं कि ये बताइए कि मेरे फैक्ट्री में प्रॉब्लम क्या है करके, क्यों मुझे लॉस आ रहा है. तो ये एक्सपर्ट है स्टैंडर्ड सेट करने में. ओके, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का एक्सपर्ट हैज कम एंड ये फाइंड किया सबसे पहले कि रॉ मटेरियल बहुत महंगा आप ले रहे हो फर्स्ट. ओके, सो यू हैव टू चेंज योर मार्केट वेयर यू आर परचेसिंग, दिस इज टू कॉस्टली एंड मशीन इज ऑफ ओल्ड मेक. इफ यू गो फॉर राइट काइंड ऑफ मशीन you can easily get about 1400 units, okay, in place of your 800. So this is another thing which he has pointed out. And here labor rates, he said, okay, like labor rates, but still what you are paying compared to all market is little high. Here you can, just say 450. Okay, 450 is a normal rate. So because if you will save 50 also in one unit, as many laborers you have, your savings will be much higher. ठीक है, तो ये बता रहा है उसको. ठीक है, तो यहाँ पे आप बचा सकते हो. फिर बाद में ये देख रहा है सेलिंग प्राइस हो, देखा उसमें 5000, नहीं, दिस प्रोडक्ट यू आर सेलिंग एट वेरी चीप, इसका आप दाम 6000 लगा लेंगे ना. फाइंडिंग्स, तो इसका सेलिंग प्राइस आप 6000 आराम से लगा लो, सारे यूनिट्स फिर भी बिक जाएंगे आपके. यूनिट्स आर अंडर प्राइस्ड. ठीक है, तो सो व्हाट डिड ही से, ही सेड सेलिंग प्राइस आल्सो कैन बी मोर बाय 6000 by 1000. Okay, and then brokerages, he said that are this is too much. Okay, we can easily find sources for you where you just have to pay a brokerage of 5000. ठीक है, ये सारे उसने आके उनको एडवाइस दिया. सो बेसिकली उसने क्या किया, उनके करंट जो सिनेरियो है, करंट सिनेरियो के लिए स्टैंडर्ड सेट किया. ठीक है, कॉस्ट के स्टैंडर्ड्स, ये कॉस्ट स्टैंडर्ड हो गया. ठीक है, जैसे सेलिंग प्राइस स्टैंडर्ड. ओके, इतना 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 हमको मिलना चाहिए, अभी बहुत कम मिल रहा है. ओके, दिस इज मशीन एफिशिएंसी स्टैंडर्ड. ओके, दिस इज लेबर स्टैंडर्ड. ओके, सो what he has done is he has set all standards. अब समझो ये he has, अभी मिस्टर ए है, उनकी बात मान के सब उन्होंने चेंजेस किया, and then with the same factory, same resources, उनको अब मिल रहा है नेट प्रॉफिट, is getting a net profit of 5 lakhs. Let us see. ठीक है, सो ये जो इमेजिनरी एग्जांपल हमने देखा है, इसमें ये पता चला है कि आप अगर गलत स्टैंडर्ड लेके चल रहे हो, आप सोच रहे हो कि 1 लाख रुपए में रॉ मटेरियल आना चाहिए, जबकि उससे कम में आपका होना चाहिए. ठीक है, तो यू शुड ऑलवेज हैव, फर्स्ट स्टेप इज आपका कॉस्ट हो या रेवेन्यू हो, यू हैव टू हैव द राइट स्टैंडर्ड. ओके, सो ये सब जो कर रहा है, हर चीज का जो स्टैंडर्ड इसने सेट किया है ना, इसी प्रोसेस, ये प्रोसेस आता है आपके स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के अंदर. स्टैंडर्ड कॉस्टिंग करता यही है, आपका हर चीज का स्टैंडर्ड सेट करता है. ओके, राइट. सो जैसे हमको ये, जैसे इस साल के लिए हमने सेट किए ये स्टैंडर्ड, हो सकता है नेक्स्ट ईयर आपको चेंज करना पड़े, थोड़ा रिवाइज करना पड़े. ओके, बेस्ड ऑन कंडीशंस यू माइट हैव टू रिवाइज द स्टैंडर्ड्स एज वेल, राइट. सो दिस इज व्हाट इज स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एक्चुअली स्पीकिंग. जो ये इन अ नटशेल यही है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग. ठीक है, दिस इज स्टैंडर्ड कॉस्टिंग. सो चलिए अभी लेट अस सी, थोड़ा सा थियरी देखते हैं.
सबसे पहले व्हाट इज स्टैंडर्ड कॉस्ट? इट इज अ प्रीडिटरमाइंड कॉस्ट, ओके, दैट इज कैलकुलेटेड एट द मैनेजमेंट स्टैंडर्ड्स ऑफ एफिशिएंट ऑपरेशंस। सो जो एक्सपर्ट आके मिस्टर ए को जो सेट करके दिया है वो क्या दिया? इट वाज द मैनेजमेंट स्टैंडर्ड्स ऑफ एफिशिएंट ऑपरेशंस। एफिशिएंट ऑपरेशंस क्या होना चाहिए? ओके, व्हाट शुड बी योर एफिशिएंट ऑपरेशंस? So predetermined cost calculated at the management standards of efficient operations and the relevant necessary expenditure. इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड कॉस्ट। ओके, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो इसमें जो है आपको ये मतलब ऑप्टिमम एफिशिएंसी हमेशा हो सकता है क्या? कैन यू ऑलवेज गेट योर बेस्ट परफॉर्मेंस? जैसे अगर अभी स्पोर्ट्समैन है, ठीक है, सो अभी हमने नाउ among people with us, Shivam is a sportsman. Okay, so can you always get one timing? If something is your best timing in your sprinting, you cannot always reach it, correct? You cannot always reach your optimum efficiency, isn't it? So your optimum efficiency cannot exist at all times. ठीक है, वो एक assumed होता है, ठीक है, मे बी आप कभी पहुंच जाए, but in most cases you won't reach your best always, ठीक है, and that is why standard cost is an assumed cost, ठीक है। हम बोल ये होना चाहिए बोल रहे हैं, ठीक है, एक्चुअली सब कुछ सही चले तो इतने में होना चाहिए हमारा। ओके, इन अदर वर्ड्स आप ही केस से मैं बताता हूँ ना, बेस्ट इज लाइक आप लोग टाइम टेबल बनाते हो एग्जाम के लिए, राइट, कि कैसे पढ़ेंगे, कब तक पहुंचना है, राइट। सो से योर टाइम टेबल इज सच दैट आपने बोले कि at this pace I should complete my course by April end, ठीक है, आपने स्टैंडर्ड सेट की। थोड़ा जब आप स्टैंडर्ड सेट करते हैं तो आप यू ऑलवेज गो फॉर टफर वन, राइट, कि जो इट वोंट बी वेरी इजी टू अटेन, इट शुड चैलेंज यू आल्सो, करेक्ट। आप बोलते हैं अप्रैल, लेकिन ये नहीं हो पाता है। नहीं, इन मोस्ट केसेस अगर हो गया, वेरी गुड, यू फॉलोड इट रिलीजियसली and you have been able to attain it, very good, but normally ये नहीं होता है, then आपको अप्रैल एंड को then you have to shift it to let us say May 15th, है ना, ये हो गया आपका रिवीजन ऑफ स्टैंडर्ड। ओके, सो चलिए, सो ऑप्टिमम एफिशिएंसी यहाँ पे बेसिक पॉइंट हम देख रहे हैं, हमेशा आपको नहीं मिल सकता, ओके, इट्स नॉट ऑलवेज, ठीक है। सो इसमें इन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग ऑल इनपुट्स of cost are scientifically analyzed using many industrial engineering techniques। so ऐसा नहीं होता कि उसके दिल में आया ये, उसने बोल दिया कि ये स्टैंडर्ड है, ओके, वो इट इज साइंटिफिकली एनालाइज्ड कि इस कंडीशन में बेस्ड ऑन दिस मशीनरी, दिस स्किल सेट ऑफ वर्कर कितने यूनिट्स बनना चाहिए, ओके। सो दे यूज मेनी टेक्निक्स लाइक वर्क मेजरमेंट, ठीक है, मेथड स्टडी, टाइम एंड मोशन स्टडी। में टाइम एंड मोशन स्टडी तो बहुत ही क्लासिक एग्जांपल है। उसमें क्या होता है आप देखेंगे तो टाइम एंड मोशन स्टडी। सो बेसिकली यहां तक के स्टडी किया जाता है कि इफ सो इन टाइम एंड मोशन स्टडी व्हाट इज डन इज से if this is a job where your worker comes from here to here, okay, your worker say is coming from here to here, or then he has to put the mud in a pit here. There's a pit here. He has to come and put the mud. Okay, this is only the activity. Okay, so now in time and motion study, what they will see is from here when he's picking up the mud, okay, which is the better position? Should he keep it here? Okay, if he keeps it here and goes and puts, is it quicker, or if he keeps it like this and he puts it, which is quicker? They also see fatigue, okay, and all that. There are certain things which might be quicker, but it can cause fatigue, okay. But here among our various motions there is always one best motion, okay, where if that is followed by everyone, then the work is more efficient. How that is seen always is, see, if you see like in a class you have got students of various capabilities, okay, you have some who are much ahead of the race, okay, some who are along with the race, you can say, right, some are behind the race also, okay. This is what happens normally, ठीक है। तो इसमें वैसे इन केस ऑफ वर्कर्स
वहां भी सेम है, हम सभी वी आर ऑल ह्यूमन बीइंग्स, करेक्ट। इन वर्कर्स आल्सो व्हाट हैपेंस, सम आर वेरी गुड, ठीक है। आप देखते हो कि एक है, in one day he has carried, let us say, thousand times he has carried. Another person has carried only 200 times. So then what they do is they study what is he doing different. There'll be certain small things. Okay, like even when mud is taken out, a slower worker will dig from a place where mud will not come easily. A quicker worker who has cracked the thing, he will take mud from a place where if he just touches a bit, then mud will flow into it. That's where you will save time. Things like that. Okay, that is called time and motion studies. Okay, it consists of time study and motion study. What I was telling you is it comes under motion study. Okay, all these things, no. So it is scientifically analyzed basically using all these techniques. Okay, that's why it is also called as scientific cost. Okay. Now we'll just talk about difference between standard cost and estimated cost. So estimated standard cost क्या है, तो आप लोग को समझ ही गया होगा. You all understood, right? What is standard cost? Now I'll tell you what is estimated cost. Okay, estimated cost is like today. Now, say some worker has come to your house. Okay, worker has come for some work. Okay, you ask him when can you complete. आप पूछ रहे हो कब तक हो जाएगा ये काम, तो वो सोचेगा, वो बोलेगा कि ठीक है 2 days, इट विल टेक 2 days. पेंटिंग ही समझ लीजिए, if called someone for painting the house. Okay. Okay, so he says 2 days. So what he will do, how he says 2 days, he'll see similar kind of work which he has done. Okay, and he'll see your house, he'll just correlate. Okay, that house I did in say 3 days, so this house this is smaller, I should be able to do it in 2 days. That's how he is saying 2 days. So what he has done to tell you 2 days is he has taken any previous actual. Okay, okay, plus, okay, he has what can we say, he has just adjusted it. Okay, adjusted it just because your current dimensions are different to that. It's taken previous actual and adjusted it. So how it would be different from standard is, say in his previous actual, if there is some say laziness or something because of which he's taking 2 days. Okay, say probably if had he done his work according to standard, he should have completed in 1.5 days. Okay, so this becomes standard. Okay, so now, okay, but he is normally doing in 2 days. Okay, so when he has to tell someone, he'll use like whatever he is able to achieve. So he will take this 2 days as basis and then adjust it. Okay, so this is called your estimated cost. Here it is estimated time. Okay, this is the funda of estimation. Okay, so you always estimate based on some actual. So if there is any inefficiency within that actual, that will get carried to your estimated costs. Got the point? ठीक है, तो अब ठीक है, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है. ठीक है, आपको टेक्निक्स ऑफ कॉस्टिंग में थियरी इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, and definitely also for your CMA part students. Okay, so in CMA, because it's fully of 50 marks, what lots of theories and these things can be asked. So now standard cost and estimated cost, so both are predetermined costs. Okay, both are determined in advance. Objectives are different. Okay, the difference will say estimated cost shows what the costs will be. ठीक है, standard cost shows what the cost should be. ठीक है, ओके, तो इसमें एस्टिमेटेड कॉस्ट में क्या, एवरेज पास्ट फिगर्स लेके दे विल जस्ट मॉडिफाई फॉर चेंजेस. ठीक है, सो ऑल वेस्ट एंड ऑल दीज थिंग्स विल ऑटोमेटिकली कम इनटू द एस्टिमेटेड कॉस्ट. ओके,
but standard costs are planned on a scientific basis. Okay, so which is why our efficiency will be at the maximum, at the best. ठीक है. So now in estimated costing system, stress is not so much on cost control. Cost control के बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं ना. In estimated, we are just trying to, tell you what is normally possible. Like in the previous 4 quarters, I have been say, in the previous 4 quarters, we have been able to produce, okay, 50 units, 55 units, 52 units, and 54 units. Okay, now if I want to tell you what is my estimated production this time, so I can just see, I mean, whichever period is closest to my current period, or just take an average of the 4. Okay, so let me just say 52. So I'll say 52. But if you see standard of production possibly can be 60 also. Okay, so here you are just seeing what is possible. Maybe your labor is lethargic, or whatever you have got, your machinery is not at its best. All those things can be there. Okay, ठीक है, ये हो गया. अब तो इसलिए एस्टिमेटेड कॉस्टिंग में कॉस्ट कंट्रोल उनका काम नहीं, लेकिन स्टैंडर्ड कॉस्ट से कॉस्ट कंट्रोल होता है. स्टार्टेड विद एन एग्जांपल, वहीं पे हमने देखा. करेक्ट. सो नाउ नेक्स्ट थिंग विल टॉक अबाउट इज टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड्स. 4 टाइप होते हैं स्टैंडर्ड. एक है स्टैंडर्ड्स में भी यू हैव गॉट 4 टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड्स, डिपेंडिंग ऑन कितना स्ट्रिक्ट स्टैंडर्ड है, बेस्ड ऑन हाउ स्ट्रिक्ट इज द स्टैंडर्ड. ओके, वन इज आइडियल स्टैंडर्ड. ठीक है. सो आइडियल स्टैंडर्ड ये बोलता है लेवल ऑफ परफॉर्मेंस अटेनेबल. ठीक है, जब आपके प्राइजेस आर मोस्ट फेवरेबल, यानी प्राइजेस आर लीस्ट, आउटपुट इज वेरी हाई. ओके, एफिशिएंसी ऑफ वर्कर्स इज गुड. ओके, देयर मोरल इज गुड. सब अच्छा अच्छा ही बोलिए. एवरीथिंग इज फाइन, all whatever conditions are required for production, everything is at its best. ठीक है, तो उसको बोलते हैं it will result in maximum output with minimum cost. Correct. It is practically not attainable. ठीक है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम होगा आपको. दैट इज एन आइडियल स्टैंडर्ड. नाम ही आइडियल है, याद रखना. ठीक है ना, हाइपोथेटिकल काइंड ऑफ. ठीक है, सब में अच्छा ही हम अज्यूम करेंगे. एवरीथिंग इज बेस्ट, कॉस्ट इज लो, जितना लोएस्ट में मिल रहा है that you will assume. Okay, efficiency, whatever, whenever was your highest efficiency, take that into consideration. So everything take at its best. Okay, you will never get that combination, right? So next is normal standard. Okay, ideal standard and normal standard. So normal standard means you just assume normal operating conditions. Okay, in normal standard you assume normal operating conditions. यानी आप ये देखोगे कि यानी you will just go for an average kind of thing. Okay, ठीक है, number of standard hours which will produce at normal efficiency. ठीक है, good enough to meet average sales demand. ठीक है, यानी ये आप सब चीज मान के रखना है कि take average production. Okay, take average sales. ठीक है, सब एवरेज नॉर्मल सबका एक बीच का फिगर आप लेके चलो. ओके, सो दिस विल बी कॉल्ड एज अ नॉर्मल स्टैंडर्ड. सो व्हेन वी आर यूजिंग नॉर्मल स्टैंडर्ड, जो आपको वेरिएंस आएगा. वेरिएंस मतलब क्या है? स्टैंडर्ड और एक्चुअल का जो डिफरेंस है. इफ आई हैव सेट अ स्टैंडर्ड ऑफ 100 एंड माय एक्चुअल इज 120, 20 इज वेरिएंस. ओके, सो वेरिएंस इज डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल. ठीक है, सो राइट. सो अगर नॉर्मल स्टैंडर्ड यूज कर रहे हैं तो आप क्या बोलेंगे वेरिएंस को, या कुछ भी. एफिशिएंसी विल बी नॉर्मल एफिशिएंसी, सेल्स विल बी नॉर्मल, सब नॉर्मल रहेगा उसमें. ऑल फिगर्स व्हिच यू विल यूज फॉर कंपैरिजन विल बी नॉर्मल स्टैंडर्ड्स. हर एक जो टाइप ऑफ स्टैंडर्ड्स है उसके पहले आप नॉर्मल लगा देंगे. ओके, जस्ट टू शो दैट यू आर टेकिंग एन एवरेज स्टैंडर्ड एज सच. बहुत बेस्ट भी नहीं ले रहे हो आप, वर्स्ट भी नहीं ले रहे हो. दैट्स काइंड ऑफ इसको बोलते हैं नॉर्मल. ठीक है, अब ये हो गया. इसके बाद देन यू हैव गॉट 2, जो इसको कहते हैं बेसिक स्टैंडर्ड एंड करंट स्टैंडर्ड. ठीक है, तो अब बेसिक स्टैंडर्ड जो है, दैट इज सच स्टैंडर्ड व्हिच रिमेन्स कांस्टेंट फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. ठीक है, तो इसमें क्या होता है,
you have many years, so उसमें से एक base year आप choose करते हैं. You choose a base year which you feel is the most representative. जो भी एक साल होगा, हाँ ये साल का डेटा इस ये रिपीट हो सकता है, आपको ये लगता है, that will be your base year. Okay, if you choose that standards, that will be your basic standard. Okay, now a basic standard anyway you are taking from a previous period, correct? So present, it does not represent what should be attained in the present period. ठीक है? So इसीलिए along with basic standard you always use something called current standard. ठीक है? So basic एक standard बना लिए, ये बोल कि ये basic है. Then okay, it will serve as a guideline for you. Okay, it's the base year. So on seeing that, you will get a guideline. So along with it, you prepare another guideline, another standard called current standard. Okay, it reflects management's anticipation of what actual costs will be for the current period. This is standard anticipated for the current period. So आप basically बोल सकते हैं basic standard कोई current conditions के साथ आप adapt कर लिए ना. If you just adapt basic conditions with your current standards, you will get with your current conditions, you will get current standards. ठीक है? तो ये cost is closest रहेंगे जो मैनेजमेंट बोलता है कि जो हो सकता है. ठीक है? स्टैंडर्ड्स कभी भी जो है ऐसा सेट नहीं करना कि जो achievable ना हो. Then what everyone will feel is अरे standards you leave it, okay, it will not be achievable. So then that standards, you know, it will not challenge people. तो standards कभी भी ऐसा होना चाहिए कि जो possible हो. ठीक है? So always make sure that standards are possible. It should not be ideal. कि ऐसा नहीं होना चाहिए. पर standards देखेंगे ही नहीं लोग ना. They will not even see it. So then उसका standards का use नहीं होगा. Okay. So always it should be what is achievable. So इसलिए current standard सबसे बढ़िया होता है. Current standard में जो है we अभी के period में whatever is achievable, okay, that you set as E. ठीक है? For example, normally my labor can produce 1,000 units. ठीक है? But I have had many resignations and all, and now I've got many new workforce. So based on the new workforce, I am setting target as at 800 units. Considering the new people will not get expert, so that they'll start producing 1,000 units. ठीक है? तो ये हो जाएगा मेरा current standard. ठीक है? और ये हो जाएगा मेरा basic standard. Okay, and what is ऊपर वाला क्या था? Normal, वो एक average था. It will be an average of everything. ठीक है? Average kind of रहेगा, बीच का ये. इसमें as such कोई आप base year वगैरह choose नहीं करेंगे. It will be normal. ठीक है? Normally ये होता है, ये देख के. It will just be a guideline kind of thing, normal standard. Ideal will be best, सब चीज best. Okay, workers working at its best, sales you're getting the best price. Okay, that is ideal. So ये होते हैं आपके 4 types of standards. ठीक है? Okay, so then अभी हम नेक्स्ट क्लास में विल डू अ कपल ऑफ प्रॉब्लम्स. ठीक है? सारी थियरी नहीं करेंगे कि अभी एक क्लास we've done theory, थोड़ा बहुत और थियरी है. Okay, we'll do it along with problems one by one. Okay, so इसमें अभी बस एक पॉइंट में बता देता हूँ, हाउ स्टैंडर्ड्स आर सेट. ठीक है? So these are the preliminaries while setting production cost standards. ठीक है? नॉर्मली जो है ना आपका स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, okay, standard costing is for एक मिनट, 1 moment. So who has joined just now with as user? Who has joined just now as user? हाँ, कौन कौन है? Who is it who's joined as user?
Okay. One moment, sorry, sir. Just a moment. Okay, okay, sorry. Chalo. So now, right? So now standard costing, as such, you can have standards for everything. Okay, standard there, but standard costing is very useful in production scenario. Okay, production में थोड़ा भी changes you can always reach an optimum level or closer to optimum level. So in production, it is the most useful. Okay, while setting production cost standards, preliminaries that should be considered ये है. Number one is ये सब preliminaries है ना, these things should be there in your organization. Production cost standard set करने से पहले. Okay, these things should be there, or you should ensure that these things should be made available, okay, before you are setting a प्रोडक्शन स्टैंडर्ड. ठीक है, सबसे पहले टेक्निकल एंड ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स पूरा स्टडी करना है. क्या मेथड है अभी मैन्युफैक्चर, व्हाट आर द मेथड्स ऑफ मैन्युफैक्चर, ऑल दिस प्रोसेसेस इन्वॉल्व, मैनेजमेंट and how does the management function, everything is important for production, right? So all these things have to be studied. So preliminaries can also be asked as prerequisites. ठीक है, so division of organization into cost centers, okay, units, all these things, initial things, rejections, losses, kya ho rahe hain currently, what is the expected efficiency, okay, all these things you have to see what is there now, okay, study in detail about that. Then second is review of existing costing system. What is the current cost system? Okay, so before you apply standard cost, you should know what you are tackling. Okay, so that is point A and B. Third is also see which type of standard is being used, current, basic, normal, okay, and which will be the best for cost control. Based on that, you can choose a standard. Okay, so and then next is, see, when for variance analysis, that is wherever you get variances, okay, you should have proper like to like comparison. Okay, there will be, this is standard 1 and actual 1. Okay, then you can compare. Then standard 2 and actual 2. Okay, like that you will compare it one by one. Okay, now you have standard 1, standard 2, but actual you have got 1 plus 2 together. How will you compare, right? Correct. So you should have correct proportionate standards and actual properly set up. That's what that point is saying. Okay, proper classification of accounts so that variance can be determined as desired. Okay, and then see, whenever you set standards or any targets, whoever is supposed to follow that, ठीक है, जो भी आपका targets follow करने वाला है उसको साथ लेके आपने बनाना चाहिए. You have to make him accountable. नहीं तो वो बोलेगा नहीं ये तो नहीं हो सकता, अगर आपने उसके ऊपर थोप दिया, बोलेगा मैंने तो पहले बोला था ये नहीं हो सकता. So you have to keep him and then make him accountable. ठीक है, once he agrees, only then you should go ahead with it. So fixation of responsibilities normally on individuals, departments should be there. Okay, whoever is associated with the setting of standards, they should be the accountable people. Okay, this is how it should be done. So chalo, so now what we'll do is you can join back by 8:45. Okay, please join back at 8:45. That is in 8 minutes. Okay, same link. Thank you. Same link, you can join back at 8:45.